So yesterday that last discussion was pi minus at rest decays to mu minus and its associated neutrino. Okay, and also given that mass of or rest mass of pi mesons is 140 MeV per c square. Rest mass of mu meson was 105.7 MeV per c square, and for neutrino or antineutrino it was 0. Then the question was how much is the energy of mu meson, how much is the energy of neutrino, and also I have asked how much is the speed of this muon. Okay, so that equation we got after conservation of energy and linear momentum, the energy equation for mu meson was, can you please tell, m pi c square whole square plus m mu c square whole square. mu c square, very good, c square whole square divided by twice m pi c square. If you substitute this rest mass of pi meson and mu lepton, you will get that number, and that number was how much? 109.9 Yes, MeV. yes, very good, 109.9 MeV. Then for antineutrino, it was how much? 30.1, right? Yes, MeV. sir. Now, what about that speed? What about this speed of mu meson? Sorry, mu lepton? Sir, m pi upon under root 1 minus b square by c square into c square जो formula होता है relativity Yes, वाला, very उसमें good. substitute करके निकाल सकते हैं. Everybody agreed? So this is the relativistic energy. So what we can write? We can write m mu c square divided by 1 minus v square by c square. No problem? This is the relativistic energy of muon. So this energy should be equals to m mu c square divided by square root of 1 minus v square by c square. Is not it? Yes, sir. Okay. Everybody agreed? Yes, sir. Yes. Now can you calculate or can you write that expression for velocity or speed? Yes. Can you solve? So you see, on the left hand side, if you take common c square, it will be actually c to the power 4, right? If you take c square common, it will be actually c to the power 4 because c square whole square for both term. So it will be simply, if you erase it, you will get c to the power 4. Any problem? No, right? No problem, right? Right, sir. Yes. So this c square on c square will be cancelled. You will get c square, and this c square will be cancelled with this. Okay. So c will be vanish, right? Sir, directly value put कर. हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट एक एक्सप्रेशन आएंगे वो कर कीजिए जरा, इसका एक नाइस एक्सप्रेशन आएंगे, अगर करेंगे इसको कितना आएंगे बोलिए जरा, एनीबॉडी? So if you calculate it, you will get 1 minus v square by c square equals to how much? 2 m pi m mu divided by how much? M pi square, right? Plus m mu square. Any problem? No, sir. Now if you square it both sides, then you will get, what you will get? Can you please tell me? So 1 minus b square by c square. 1 minus b square by c square equals to 4 m pi square m mu square divided by m pi square
plus m mu square whole square, right? Is not it? Yes, sir. So we can write v square by c square equals to how much? 1 minus 4 m pi square m mu square divided by m pi square plus m mu square then whole square, right? So if you Yes, solve it, sir. you will get m pi square minus m mu square whole square divided by m pi square plus m mu square whole square. इस एक्सप्रेशन में किसी का डाउट है कैसे मैं लिख रहा हूं? ऊपर m pi square minus m mu square whole square कैसे लिख रहा हूं? यहाँ पे ये यूज, हाँ यहाँ पे क्या होगा? ये आपका ये फॉर्मूला नीचे नहीं दिख रहा है, ओके मैं ऊपर लिख रहा हूँ. यहाँ से आपका v स्क्वायर बाई c स्क्वायर कितना आएंगे? सिंपली 1 माइनस 4m pi square, right? Then you have m mu square divided by m pi square plus m mu square then whole square, right? It will be whole square. Now this expression can be written as m pi square minus m mu square whole square divided by m pi square plus m mu square whole square. तो मैं पूछ रहा था how you got this m pi square minus m mu square whole square? Any idea? By completing the square. हाँ, इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा आपका a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर. एवरीबॉडी एग्रीड? Yes, sir. है ना? वही यूज होगा ना. यहाँ पे a क्या है? m पाई स्क्वायर और b क्या है? m म्यू स्क्वायर, राइट? Yes, sir. एवरीबॉडी एग्रीड? Sir. यस. एनी डाउट? No, sir. No, right? Very good. Now if you make square root, then you will get v equals to simply m pi square minus m mu square divided by m pi square plus m mu square whole square will be gone and you will get simply c. So you know m pi, you know m mu. So after substituting this, you will get the velocity or speed in terms of c. Okay? तो एक अच्छा एक्सप्रेशन आया ना. वहां पे भी कर सकते हैं, जिसने बोला था वो करेक्ट था कि वहां से भी कर सकते थे, बट एक अच्छा एक्सप्रेशन आया है ना. नॉट इट? Yes, sir. Okay, very good. So today we will solve one more problem, then we will go for quark model. Okay? Okay, sir. Okay. Are you enjoying class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay. So let us solve one more problem, and that problem is, suppose you have cascade minus and it decays to lambda 0 plus pi minus. Can you please check what type of interaction or decay it is? Anybody? So problem one. Shall I proceed? Yes, sir. Okay, let us check charge. So for sigma, cascade minus, the charge will be how much? Minus 1, right? Minus 1. For lambda 0, it is 0. For pi minus, it is minus 1. It means no problem with charge conservation. Delta Q is 0. Then
Let us check spin. Baryon number. We'll Yes, check one by one. Spin for cascade minus, spin is half. For lambda 0, spin is half, again half. But for pi 0, spin is 0. 0. It means spin is conserved. Is not it? Conserved, right? Next, Yes, sir. let us check lepton. So none of them are lepton particles. So obviously lepton will be conserved, right? Is not it? Yes, sir. Let us check baryon number. So baryon conserved, right? Yes. Sir. Very good. So for cascade minus, baryon is on. For lambda 0, baryon is on. But for pi minus, it is 0. B is 0. Okay, it means delta B equals to 0. So baryon is conserved. Now, can you check strangeness noted by capital S for cascade minus? Minus 2. Very good. Very good. Minus 2. For lambda 0, it is Minus 1. minus 1, right? Very good. Yes, sir. Then for pi minus, it will be 0. 0. 0. It means delta S not equals to 0, but inside bracket, it will be how much? On, right? So if you remember, I said for weak interaction, 99% chance that S will not be conserved, but maximum change can be how much? On, right? Yes, Not sir. it? Yes. So this is weak decay, right? So allowed by weak interaction. Okay, any problem? No, right? इसको further भी हम लोग verify कर सकते हैं। देखिए यस बेसिकली क्या करते हैं, ये सारे जो आपका एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है ना, वो आपको बता देगा कि ये अलाउड है या नहीं है। फिर आप क्राइटेरिया में आ जाइए। जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग में और ईएम में कंजर्व है, बट क्या है वीक में कंजर्व नहीं है। तो ये इंटरेक्शन अलाउड यहाँ तक बता रहा है कि अलाउड है। अब स्ट्रॉन्ग और ईएम तो बंद हो गया, तो एक ही रास्ता खाली है, वीक है ना। Yes, Yes, that's why I didn't check. You can check also. Okay? yes, Because you know, for weak interaction, it will not be conserved. Okay? Okay. So far, so good. Okay. Now we'll start quark model. So there exist 6 quarks in nature, namely, so quark, namely up noted by U, then down noted by small d, small letter d, then charm, then strange quark, then top quark, then bottom quark. Okay. If you see their spin, can anybody tell that spin? Very good. Yes. Sorry, your voice is not clear. Can you? name of the Your voice is not clear. Can you please repeat? कोई और बताइए क्या पूछ रहा है? Yes. हाँ? 1 minute. It's the name of quark. Up, Okay. down, charm, strange, top, and bottom. Okay, okay. Up, down, charm, strange, top, bottom. Okay. So I'm writing here. This is up. This will be down.
दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ओके, देन दिस विल बी चार्म कॉर्क, this will be strange cork, this will be top cork, and this will be bottom cork. एक्चुअली मैं बोला था, मैं सोचा कि आप लोगों ने लिख लिया है ना, मैंने नाम बताया था ना, इसका अप है, इसका डाउन है, इसका चार्म है, स्ट्रेंज है, टॉप है, बॉटम। अब इसका स्पिन बताइए। 1/2. हाँ, ऑल और हाफ, राइट, स्पिन ऑल और हाफ। Now charge, capital Q, let us assume. Charge, anybody? 2/3 by for up, 3. For up it will be up, top, and strange. 2/3 E. Then for down it will be minus 1/3. Minus 1 3. Then plus 2/3. very good, 2/3. Then Minus 1 by for strange it will be minus 1/3 E. For top it will be 2 plus 2. 3. For bottom it will be minus 1/3. See, these are fractional charge. Okay, but these charge are bound charge, right? Because you cannot find free cork, right? They are bound. Okay, so these charge, Yes. although these charge are fractional, but these charge are not free. Okay, they are bound charge. Okay, so I'm repeating, for up cork charge will be 2/3 each electronic charge. For down it will be minus 1/3. For charm it will be plus 2/3. For strange it will be minus 1/3. For top it will be plus 2/3, and for bottom it will be minus 1/3 E. Okay, now baryon number noted by, let us assume, yes, capital B. 1/3, right, for all. 1/3, very good. So baryon number is 1/3 for all. Next, isospin. For up it will be half, for down it will be half, but for others it will be 0. What about I3? Plus or minus. Very good. It will be plus half and minus half, and 0 for all others. Okay. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Sir, yes, sir. Isospin 1/2 कैसे है? Up or down का? Isospin half and yeah, actually they have almost similar mass, right? But they have different charge. अगर वो कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो फिर 2i plus 1 equals to how much? 2i plus 1 equals to 2, right? So I should be half. I should be Yes, half. sir. I should be half, right? Is not it? हाँ सर, मास में 4 times का डिफरेंस है. या बिकॉज मास में डिफरेंस है, बट क्या है ना, एक्चुअली क्वार्क मॉडल में अभी भी रिसर्च चल रहा है, बट डिफरेंस है, बट इनका मास जो है बहुत लाइट है ना, तो मे बी सम रिसर्च इज गोइंग, बट आई को हाफ माना है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना. आई को हाफ माना है, तो I3 कितना होगा? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. ओके, बट फॉर ऑल अदर 4 इट विल बी 0. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, आप लोगों ने, किसी ने पूछा था कि स्ट्रेंज कॉर्क का S माइनस क्यों होता है ना? हाँ सर, ये सब कुछ है. हाँ, किसी ने पूछा था ना? मैं सर. हाँ, तो जो आपका गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला है, आपका क्वेश्चन अच्छा है. आई इनका क्या है, एक्चुअली क्या है ना, ये बाउंड सिस्टम है ना, सो क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई विल सर्च एंड आई विल टेल यू. हाँ, आंसर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी राइट नाउ. Yes. आई विल टेल यू आंसर. ओके, Okay sir. Yes sir. answer is very good. Question is very good. Now, if you remember that Gelman-Nishijima formula, what was that? Q equals to I3 plus B plus S by 2, right? Yes sir.
फिर इसको क्या था हम लोगों ने I3 प्लस B प्लस इसको क्या माना था y, राइट, y y by 2. y क्या है आपका एक्चुअली हाइपर चार्ज है. अब क्वार्क में क्या हो जाएगा, हाइपर चार्ज जो है मॉडिफाइड हो जाएगा. अब क्या हो जाएंगे, जो y होंगे क्या होंगे, बेसिकली योर y विल बी सिंपली baryon number, then strange, then charm, then top. These are quantum number, charm quantum number, top quantum number, then you have bottom quantum number. So now can you write that relation, modified formula? Can you please write? Can you please write? So it will be simply, if you write it, Q equals to how much? It will be simply I by 3 plus B plus S plus C plus T plus small b. Small b means bottom, okay, bottom quantum number, divide by 2. अब जरा स्ट्रेंज क्वार्क के लिए बताइए चार्ज कितना है, स्ट्रेंज क्वार्क के लिए चार्ज कितना है, कैन यू प्लीज टेल मी? -1/3. Very good. So it is -1/3. I3 is 0. Then B is how much? 1/3, right? B is how much? 1/3, right? Baryon number, capital B. Yes. S you don't know, you are going to calculate, and other quantum number will be 0. Is not it? Any doubt? No doubt, right? Or any doubt? Yes. Okay. Divide by 2. Now can you please check how much will be the S? How much? -2/3. -1, right? So if you solve this equation, you will simply get S plus 1/3 equals to -2/3. Okay. So S will be -1, right? S will be simply -1. Okay. So this Yes, is your sir. answer. This is your answer. Okay. So it is derived from Gell-Mann-Nishijima formula. Similarly, you can check charm quantum number. How much it will be? Anybody? So if you again solve this equation for charm quark, then this charge will be how much? 2/3, right? Yes, sir. I3 is 0. B is how much? 1/3. AC is 0. You have to keep C, right? Only divide by 2. So these 2 will come and it will make 4/3. And on the right hand side, you have 1/3. If you bring on the left hand side, so 4/3 minus 1/3 will be how much? 1, right? So charm quantum number will be +1. Similarly, if you check top quantum number, We take S equal to 0. yes, this is related to strange quark, right? So there is no relation between strange and charm, right? Is not it? S is related to only strange quark, right? So there is no relation between S and C, right? They are different quark. Okay? Okay, sir. Similarly, if you check top quantum number, how much it will be? Anybody? Top quantum number कितना होंगे बताइए जरा? Anybody? Any guess? So if you see, जहाँ पे आपका चार्ज माइनस, 1. very good. जहाँ where the charge is minus, then that quantum number is minus, right? Where the charge is plus, the quantum number is plus. है ना? तो इसको Yes, sir. आसानी से आप ये कर सकते हो, है ना? सॉल्व तो कर सकते हो, बट यहाँ से आप ये लगा सकते हो, है ना? So I told you that this is the answer. Okay, so it belongs to quark model. Now you can write that S quantum number for. So S mean here strange. For up it will be 0, for down it will be 0, but for for charm it will be 0, for strange it will be -1, for top it will be 0, for bottom it will be 0. Similarly, charm quantum number जो होंगे आपका अप डाउन के लिए 0 होंगे, चार्म के लिए 1 होंगे, स्ट्रेंज के लिए 0, टॉप के लिए 0, बॉटम के लिए 0.
Similarly, you can define top quantum number also, top and bottom. So for top quantum number, only top will have top quantum number, or top quark will have top quantum number, and for all others it will be 0. And for bottom quark, bottom quantum number will be how much? -1, right? -1, right? Is not it? Yes. 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 And for all others it will be 0. Okay. Okay. Now each baryon is made up of, each baryons is made up of 3 quark. Small q means quark, right? So each baryon is made up of 3 quark. Okay. And each meson quark anti-quark. a pair of quark anti-quark. It means q bar. Okay. Any doubt? सर ये क्वार्क के साइन से है या फिर अलग है? हाँ, एक क्वार्क का साइन दिया मैंने, स्मॉल q मतलब क्वार्क. सो 3 क्वार्क से एक बैरियन बना होता है. हर क्वार्क, हर बैरियन जो होंगे आपका, so it will made up of 3 quarks. Okay. And each meson will made up of a pair of quark and anti-quark. Okay. Okay. So if you see proton, inside proton is composed of 3 quark, u d. U means up. So up is fermion, right? Not it. Up is fermion, right? Yes, sir. All are fermion. All are fermion, but they have down has different charge and other quantum numbers. But problem with the with proton representing a single state, right? Proton is a single state, and in a single state, 2 same type of quark are staying. So they are violating the Pauli exclusion principle because they have same spin, right? And all other quantum numbers also. So they have same spin, they are spin half particle. So they are staying in a single state. So they are violating Pauli exclusion principle. Similarly, if you see the composition of neutron, anybody? Up, down, down. Very good. Or we can write down, down, up. You can arrange. Okay, no problem. So they are similar type of quark. They have same spin. They are staying in a single state. So they are violating Pauli exclusion principle. So that's why they have given concept of color. So each quark can have 3 color. Suppose you have up, so it can have 3 color, namely red, blue, then you have green. Okay. Similarly, down can have 3 color. Okay. Charm can have 3 color. Top can have 3 colors. Bottom can have 3 colors. Strange can have 3 colors. So सारे quark का 3 color possible है. Okay. सर ये इसलिए दिया था क्योंकि एक साथ हैं, एक स्टेट के अंदर है, इसलिए इनको अलग अलग दिया था सर. वेरी गुड. सारे एक साथ है तो ये क्या हो रहा है, पाउली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं ना. ओके सर. ये टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम दे हैव गिवन 3 डिफरेंट कलर फॉर ईच क्वार्क. ओके. फॉर सर ये हमने अपनी तरफ से दिया है सर, ये मतलब कि scientists they have given yeah, to resolve this problem scientists have given that color concept of color. तो ये सर कंसेप्चुअली इसमें कोई मैथमेटिक्स या फिर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे समथिंग कुछ तो नहीं दिया ना सर इसके साथ? No, they have not given. They are so they are not related to real color. This is imaginary color. Okay. Let me proceed. 5 minutes I'll give that lecture, then it will be clear. So each quark can have 3 color, and each
anti-quark can have 3 anti-color. So anti-quark का क्या क्या कलर होंगे बताइए जरा. Anti-red, it can be R bar. R bar means anti-red. Okay. Similarly, anti-blue B bar, anti-green G bar. तो ये आपका anti-quark का है. ओके. बट इनका जो कॉम्बिनेशन होंगे आपका रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, ये क्या है, कलरलेस है. ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, कलरलेस है ना. तो इनका कॉम्बिनेशन जो होगा रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, ये क्या होंगे आपका, कलरलेस होंगे. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सपोज मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ टाइम ये आपका रेड है, तो नेक्स्ट क्वार्क यू कैन बी ब्लू and down can be green. Now they are different because they have different color. So now they are different. Okay, so no problem with staying in a single state because they are different, because they have different color. Similarly, for neutron d du, so for first d if the color is red, then for second d it can be blue, and for U it can be green. Their combination will be colorless. Okay, any doubt? But ये डिफाइंड नहीं है कि U के लिए R ही होंगे, ये डिफाइंड नहीं है, ये कोई भी हो सकता है. वन थिंग सर, ये मतलब कि कलरलेस क्यों होंगे सर? प्रोटॉन को आपने देखा है? नहीं सर, फिर? देखा तो हमने, कोई भी पार्टिकल नहीं है सर, सारे कलरलेस हैं. तो साइंटिफिक है ना. If you not able to see, then it will be colorless. तो सर इलेक्ट्रॉन भी कलरलेस है? हाँ, yes. इलेक्ट्रॉन भी color... हाँ, it is colorless if it is at rest, but if it is accelerating, then it will emit radiation, right? ओके सर, मतलब कि जो एक्सीलरेट करेगा और जो एमिट करेगा वो हमारे लिए कलरफुल है. Yes, और yes. जो करेगा वो कलरलेस है. प्रोटॉन को देखना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कलर एक्चुअली कलर नहीं है, रेड ब्लू ग्रीन, Yeah, बस क्वांटम स्टेट डिस्क्राइब. yes, yes, yes. That's what I said. That these are imaginary color. Did I say it right like that? These are हाँ सर, मैं imaginary. वही कहने लगा. हाँ, these are imaginary color. ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों का कंपोजिशन लेके आपका कलरलेस होगा. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? नो सर. सर जरूरत क्या थी कलर डिफाइन करने के लिए? कलर अपन मान लेते हैं कि अलग अलग क्वांटम स्टेट में होंगे सारे, क्योंकि फर्मियन एग्जिस्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि आपका सारे एक्चुअली प्रॉब्लम मैंने बताया ना, दोनों का क्या है, स्पिन सेम हो रहा था, उसीलिए कलर का कॉन्सेप्ट आया. सर वो कलर कॉन्सेप्ट इसे लाया था ना कि बताने के लिए कि अलग अलग क्वांटम स्टेट्स में हैं ये तीनों, एक टाइम पे नहीं है. दैट्स व्हाई कलर. ग्लू ऑन ट्यूब, Yes. अब आगे हम लोग को पता चल चुका है ग्लू ऑन ट्यूब एग्जिस्ट करता है, वो अलग अलग पॉइंट पे रहता है. Yes, तो yes. पढ़ने की जरूरत नहीं है कलर. Yeah, actually that time that quantum number came because to distinguish, right, when that quark model established. Okay. Actually, it is a part of quantum chromodynamics, right? Yes, yes, that you can say. But what that quark model is to say that I am delivering. Okay. So for each color, it can have each quark it can have 3 imaginary color. Okay. But is it possible to see proton? Anybody? Is it possible? Not yet. Not yet. So that's why they are saying that combination of 3 color will be colorless. Okay. Because आप नहीं देख सकते हो ना उसको. अगर नहीं देख सकते हो तो फिर क्या बोलोगे? कलरलेस ही बोलोगे ना. और एनी प्रॉब्लम है? नो, राइट? इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हो? नो सर. No, sir. आप कहाँ तक देख सकते हो? एनी बॉडी, एनी गेस? सर एटम के बाहर सर, एटम में नहीं. इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ तक देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक. इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ देख सकते हो, है ना? सर. हाँ, यस. सर जो आपने अभी प्रोटॉन के लिए बताया था अप अप डाउन, उसमें एक रेड एक ब्लू एक ग्रीन, और ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है. हाँ. तो ऐसे तो 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना. तो क्या ये 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या 8 अलग अलग पार्टिकल्स को या उनके अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, यस. मतलब आप सही बोल रहे हो. दिस अ डीप क्वेश्चन. ये आपका क्या है, अगर सपोज मान लो 2 यू है, तो एक का अगर सब कोई भी हो सकते हैं तीनों में से, रेड ब्लू ग्रीन, तो एक का अगर ग्रीन है तो वो डेफिनेटली दूसरे का ग्रीन नहीं होंगे. कुछ भी आप ले सकते हो, तो अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है. यू आर करेक्ट. सर ऐसे डिस्क्राइब होता है ना, प्रोटॉन के अंदर ग्लूऑन फील्ड है और उसकी ग्लूऑन ट्यूब्स में अलग अलग नोड्स हैं. नोड्स पे एक कहीं बैठ सकते हैं. Yeah, that will perform when you will do that research. But for that topic, whatever that content that I am giving,
So you can say that thing in research. नहीं तो सर वो जो पॉइंट है कि 8 अलग पॉसिबिलिटीज है अरेंजमेंट की, yes, उससे yes. 8 अलग स्टेट्स नहीं आते हैं बस 8 Yes, but possibilities is there, right? When you are taking up quark, is any color you can take, right? Not it. Suppose Yes, sir. यस suppose you have up, down, right? So it can be any color, right? There is not a particular color, right? ये आपका कुछ भी हो सकता है, आपका R भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है. अगर ये R हो गया तो ये डेफिनेटली R नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू कलर कॉन्सेप्ट. यस सर Is not it? So any possibilities are many possibilities are there. Okay. समझ रहे हो ना? ये काइंड ऑफ आपका क्या है, मॉडल है ना. So there can be many questions, right? And that question will be solved when we will go for doubt class. Since this is a model, right? Any doubt? Or shall I proceed? प्रोसीड्स Okay. Similarly, if you see pi meson, suppose sorry k meson, k0 का quark composition क्या होंगे बताइए? Any doubt? नहीं पता हाँ नहीं पता ना. Suppose you have D as bar. तो अगर D का कलर कुछ भी हो सकता है. सपोज मान लीजिए आपका R है, रेड है, तो इट शुड बी R bar to make it colorless. Okay? यस सर Okay. Now we'll discuss the quark content of each meson. We'll discuss that. सर बेसिकली किसी भी दो कलर्स को मैच करें तो कलरलेस ही होगा या एज फार एज वी नो दैट दे आर नॉट रियल कलर्स. नहीं sir, for meson with that q bar, right? So one will be color, another will be anti color. Suppose it is आपका R है तो it should be R bar, right? Is not it? To make it anti colorless. यस सर या Yes. And for baryon, 3 should be different colors, right? Now quark content of mesons. अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स में किसका इंटरेस्ट है रिसर्च में? मेरा सर हाँ वो दिख रहा है. आप आगे अच्छा करोगे, आई बिलीव, है ना? थैंक यू बट सर आप जो, हाँ मोस्ट वेलकम. आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, एक्चुअली वो रिसर्च ओरिएंटेड है ना, तो फिर आप आगे उसको अच्छे से करना, ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे आपके यस साथ. सर ओके. क्योंकि यहाँ पे आपका CSIR फोकस्ड है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा. आप सपोज मान लो मेजोन में क्या क्या है आपका, तो पहले इसका क्वार्क कंटेंट चेक करने के लिए क्या क्या क्वांटिटी लेंगे हम? चार्ज लेंगे, फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, देन बैरियन नंबर, देन स्ट्रेंजनेस, देन विल चेक दैट क्वार्क कंटेंट. Okay, so meson. Okay. So first will be pi plus. Charge is how much? यस सर Charge plus on. Very good. I3 is how much? Everybody. I3 is how much? प्लस हाँ 1 सर प्लस 1 हाफ हाफ I3 हो रहा है सर +1 हाँ, कंफ्यूज मत होना, है ना? सर आई बता रहा Plus on, right? B is how much? हाँ मेरी ना Zero. क्लास चल रही है मैं तुम्हें B is, हेलो मेरी क्लास चल रही है 15 मिनट कॉल है। करता हूँ. can you please दीपक mute? Okay. So B is 0, right? S is how much? 0, right? तो एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द मेजॉन्स है, मोस्ट नहीं सारे, और बैरियंस है, वो तीनों क्वार्क से बना है ना? क्या क्या है वो? अप, डाउन एंड स्ट्रेंज, है ना? तो एस 0 है पाई प्लस के लिए, तो डेफिनेटली क्या नहीं होंगे? एस क्वार्क नहीं होंगे ना? तो Yes. फिर अब बताइए इसमें क्या क्या होंगे? तो आपका मेजॉन है, डेफिनेटली क्या होंगे? एक क्वार्क होंगे और एक एंटी क्वार्क होंगे. तो अब बताइए इसमें क्या होंगे फिर? यू डी बार हो सकता है? यस सर
एवरीबॉडी एग्रीड? Yes. कैसे चेक कीजिए इसका चार्ज? यू का चार्ज कितना है? 2/3 है। +1/3. डी का कितना? डी बार है तो डेफिनेटली डी का कितना होता है? -1/3। डी बार ले रहे हो तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? +1/3। तो 2/3 + 1/3 कितना हो गया आपका? ऑन हो गया, राइट? तो चार्ज इज सेटिस्फाइड। नाउ चेक I3। I3 यू का कितना होता है? प्लस हाफ होते हैं, प्लस हाफ होते हैं ना? Plus. For Yes, D it is -half, but for antiparticle it will be +half. So +half. How much on? So I3 is on. Since it is meson, so baryon number will be 0. So for up it is 1/3. For down bar it will be -1/3. So baryon number will be 0. And there is no strange quark, so S will be 0. Everybody agreed? कोई डाउट है इसमें किसी का? सर चार्ज चेक कर रहे हैं तो I3 क्यों चेक कर रहे हैं? I3 भी चार्ज क्वांटिटी बताता है। हाँ I3 नहीं चेक ऐसे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I3 अगर नहीं चेक करोगे तो भी बोल सकते हो, है ना? यस और अगर I3 नहीं चेक करोगे तो सर चार्म और स्ट्रेंजनेस टॉप बॉटम में जा सकता है, बट I3 में तो +1. हाँ दैट पॉइंट यू कैन से, बट मेनी पीपल यू सी I3 अगर इसमें देखोगे ना, हाँ वो आपका एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, टॉप बॉटम में जा सकते हैं ना? हाँ सर, बट Top टॉप bottom में बॉटम में जैसे तो I3 तो 0 है, हाँ बट हाँ हमारा तो yes, I3 1 सेटिस्फाई yes. करना पड़ेगा। That's a very good point. I appreciate it. So if you do not take I3, then it can be goes to top and bottom, right? Is not Right, it? sir. Yes, Yes, sir. That's a very good point. I appreciate it. Next is pi minus. Pi minus, anybody? Charge is how much? -1. अच्छा सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्लास में? कोई डाउट है तो Yes. बताइए, है ना? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. सारे लोगों को Yes. समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका I3 कितना है? -1. -1, right? B is how much? 0. B is 0. 0. AC is 0, right? Now can you please tell what content of pi minus? DU bar. Others? यस सर DU बार। Others? You DU bar, is it? So U bar D. U bar D, right? Very good. All agreed? यस yes, सर। sir. Okay. So it will be U bar D. किसी को कोई डाउट इसमें? किसी कोई डाउट? No doubt, right? Any doubt? U bar D दोनों हो सकते हैं। No, U bar D only, right? Because U bar के लिए चार्ज कितना हो जाएंगे आपका? -2/3 हो जाएंगे। D के लिए कितना हो जाएंगे? -1/3. So -2/3 -1/3 will be -1. Okay. Then you have I3, right? I3 U bar के लिए कितना हो जाएंगे? -1/2. D के लिए ऑलरेडी आपका -1/2 है, तो -1 है, और बैरियन तो है नहीं, स्ट्रेंज भी नहीं है, तो फिर U bar D है, ठीक है ना? इसका बताइए जरा पाई 0 का, इसका चार्ज कितना है? 0 है। 0. I3 कितना है? 0. 0 है। D कितना है? 0 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें बताइए जरा? D bar, U bar. सारे लोग क्या D पॉसिबिलिटी? D bar या U bar. वेरी गुड. सो इट विल बी U बार, D बार एंड एनीथिंग S बार हो सकता है, राइट? सर S तो 0 है ना? हाँ तो S बार है ना, तो 0 हो गया। कोई डाउट? S का कितना? -1 है, S बार का +1 हो गया तो 0 हो गया ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखिए S बार लेके चार्ज कितना हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। I3 0 है, B 0 है, S बार का S भी 0 होंगे, है ना? ये पॉसिबिलिटी है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर। हाँ। नेक्स्ट K+. अच्छा S बार होंगे ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। राइट। K+ का बताइए जरा। +1 charge. +1 चार्ज। नेक्स्ट बैरियन नंबर I3 +half. वेरी गुड। plus half. D bar भी हो सकता है। B 0 +1.
0 प्लस 1, वेरी गुड। इसका क्वार्क कंटेंट क्या होंगे बताइए? एनीबॉडी? सर यूएस यूएस? सॉरी यूएस बार। एवरीबॉडी एग्रीड? सर यस। सर पाई 0 का बी बार क्यों नहीं है? हाँ, बी बार बी बार पाई 0 का, हाँ उसमें मास का फैक्टर आ जाएंगे ना, मास का ये है ना वहाँ पे। आप बॉटम के लिए बोल रहे हो ना? बॉटम के लिए बोल, हाँ बॉटम, बॉटम का मास बहुत हेवी होता है राइट? अच्छा हाँ तो मास का भी ये फैक्टर आएंगे ना वहाँ पे, वो नहीं हो सकता। इसमें बताइए जरा। सर यूएस बार ही होगा। यूएस बार पक्का सारे लोग? यूएस बार राइट, एनी डाउट? सब एग्रीड है यूएस बार होंगे? यस सर, यस। सारे लोग एग्रीड? K0 को बताइए जरा। चार्ज K0 को क्या होंगे? चार्ज कितना है? 0 है। I3 कितना है? -12 है। B कितना है? 0 है। S कितना है? +1 है। हाँ, क्वार्क कंटेंट क्या होंगे? +1 है राइट। क्वार्क कंटेंट क्या होंगे? एस बार डी। तो डीएस बार। यस सर। DS बार राइट। सब एग्रीड है? DS बार होंगे राइट? एवरीबॉडी एग्रीड? यस सर। क्योंकि आपका D का चार्ज कितना है? -1/3, S बार का +1/3, चार्ज विल बी 0। I3 for D it is -12, for S bar it will be 0, so I3 will be -12, so D का कितना baryon number 1/3, S bar का कितना है -1/3, so it will be 0। S D का 0 है, S bar का +1 है, so it is satisfying। okay, next eta 0, charge 0, I3 0, B 0, S 0, तो इसका भी पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगे? U bar, D bar, S bar, ठीक है ना? कोई डाउट? यस सर। ओके सर यस। ये जो पाई 0 और बीटा 0 का क्वार्क कंटेंट सेम है, तो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेगा मतलब साइंटिस्ट जब कौन सा? मतलब अच्छा, लैब में जब करेगा सर आइडेंटिफाई? actually yes, they are made up of they have different states, so according to quantum mechanics they can be the superposition of these three states, right? जैसे आप लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो? U bar, then you have D bar, right? and S bar, right? Yes. है ना? तो इसका जो सुपरपोजिशन स्टेट है, मेरे को जितना याद है, इनका अलग अलग होता है। इसका जो स्टेट होता है, हम जब सीजी कोफिशिएंट पढ़ेंगे ना, एटॉमिक में पढ़ूंगा सीजी कोफिशिएंट, तब हम डिस्कस करेंगे कैसे आता है कोफिशिएंट, है ना? तो इसका जो ईटा 0 का जो स्टेट आता है 1/√6 U बार प्लस D बार माइनस 2 S बार। किसी को याद है ये? एनीबॉडी? नो सर। हाँ, इसका स्टेट ऐसा आता है। जब हम सीजी कोफिशिएंट करेंगे तो फिर इसको डिराइव करेंगे कैसे आते हैं, है ना? तो तीनों का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर पाई 0 का देखोगे, पाई 0 का ये अलग आता है ना? इसका जो कोफिशिएंट अलग अलग कोफिशिएंट आता है, तो वहां से आप एक डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों को। मतलब हर एक का स्टेट अलग अलग? या दे हैव डिफरेंट स्टेट, आई मीन दे हैव सिमिलर कंपोजिशन बट कोफिशिएंट इज डिफरेंट। Superposition. Yeah, superposition. Now we'll check that content of baryon. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है? यस सर 2 मिनट। Okay, then I'm leaving here. Okay, we'll discuss tomorrow, we'll discuss the core content of baryon.
then we'll define that octet for meson, for baryon, then decouplet, then we will go for Feynman diagram, then string theory. Okay. Okay, sir. Thank you, Okay. sir. Most welcome. Okay, bye all. Thank you. Most welcome. Okay. Thank you.